इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे कैसे कराओ। ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो आइंदा से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सनल। कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी, तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में जी, वो जो 2017 के लॉ के तो इसका आप देखिए, अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी, क्या करेंगे? खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारे दरवाजे तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ? नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि मैं इलेक्शन में, अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें? पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन कर रहा है। आम खबर से आपको आगाह करें, चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद बैरिस्टर गौहर अली के घर पहुंच गए हैं। आईजी इस्लामाबाद छापे के हवाले से खुद तहकीकात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के बेटे ने आईजी इस्लामाबाद को वाक़े के हवाले से आगाह कर दिया है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद पहुंचे हैं बैरिस्टर गौहर के घर, और वहां जाकर वो इस वक्त सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछगछ कर रहे हैं। उनके बैरिस्टर गौहर के बेटे ने उनको जवाब दिया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने जायजा लिया, और पूछा जा रहा है कि क्या मामला पेश आया था। चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए थे, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर को बाकायदा कोर्ट में तलब किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में यह बयान भी दिया और फिर वो पहुंचे हैं बैरिस्टर गौहर के घर। इस हवाले से मजीद जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान मुगल, बताइएगा, इस वक्त आईजी इस्लामाबाद जो है वो बैरिस्टर गौहर के घर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचे, और ये हमारे इस्लामाबाद की वफाकी पुलिस है और ये मिसाली पुलिस है कि जिसको इतना भी अंदाजा नहीं होता कि अगर उन्हें इश्तिहारी पकड़ना है तो इश्तिहारी के यहाँ से पकड़ना है। एक सियासी जमात के जो चेयरमैन है उनके घर पे पुलिस पहुंची और वहां पे जाके उनको हरासा किया, और हरासा करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया तो आईजी इस्लामाबाद ने वहां जाकर बयान दिया कि जी पुलिस इश्तिहारी के पीछे गई थी, तो हम वहां से कोई सामान नहीं उठाया गया, अगर कोई उठाया गया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी मुलाकात के बाद दोबारा चीफ जस्टिस की तरफ हुक्म दिया गया और आईजी को हदायत की गई है कि उनके घर पर पहुंचे और वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लें, और जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब दोबारा आईजी जो है उनके घर पर पहुंचे और वहां जाकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जबान मुगल। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे समाअत जारी है।
This law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. Ya to kahin ye crime nahi hai, wo ek alag baat hai. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा. देता है, लेकिन मैं अर्ज करूं, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. There can be a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा, एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, ANP कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी ANP का लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस. मगर देखिए अपने कॉन्सिक्वेंस, आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या PDM आ गई या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल, हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं. So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा. लिख लिया है, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Not it. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? Yes. इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं. हाँ, नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं चल रहा हूँ. Next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail
over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66. Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mia Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने 2. मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It's a settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ye hai there. I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. Isme clause 2. Declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But they can declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that he doesn't have a jurisdiction and he conceded. This is your lordship's impression. Nothing more I have to say about it. Sir,
खान साहब खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें। बस जल्दी कर देता हूँ। आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी। My submission is, it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो, आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ भाई, राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट। कोई डिनाई नहीं कर रहा है, आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर he was entitled to that, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party? They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP, time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship you want to suffer the I consequences. should conclude early so that. Jeez. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. Time and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया है। देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the election commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. आगे बढ़े। आम खबर है, बैरिस्टर गौहर के घर पर मुबैना हमला। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सहाफियों से भी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि हमें किसी किस्म का इंदिया नहीं है। हमले के हवाले से पुलिस के एक्शंस पर सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर गौहर के घर गए हैं आईजी इस्लामाबाद और उनके घर जाकर छापे के हवाले से जो है वो तहकीकाती टीम भी बना दी गई है और मुकम्मल तफ्तीश करने के हवाले से यकीन दहानी भी की गई है। आम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो बैरिस्टर गौहर के घर जाकर उन्होंने छापे के हवाले से तहकीकात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैंने आके बैरिस्टर गौहर साहब से मिले हैं। उनकी जो भी शिकायत है वो हमने सुनी है। जो भी उनकी पोजीशन है, जो भी उन्होंने कहा है, उसमें पुलिस की एक पूरी टीम उस सारे क्राइम सीन को देख रही होगी। जहाँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मैंने आके बैरिस्टर गौहर साहब से मिले हैं। उनकी जो भी शिकायत है वो हमने सुनी है। जो भी उनकी पोजीशन है, जो भी उन्होंने कहा है, उसमें पुलिस की एक पूरी टीम उस सारे क्राइम सीन को देख रही होगी। जहाँ जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं। आईजी इस्लामाबाद गुफ्तगू कर रहे थे सहाफियों से। बैरिस्टर गौहर के घर के बाद पहुंचने के बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर गौहर के घर आया और छापे पर तहकीकाती टीम बना दी गई है जो मुकम्मल तफ्तीश करेगी। एसपी सिटी तमाम तर मामलात की निगरानी खुद करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।